Hi, good morning everyone. Hope you all are fine at home. Today we will start our exercise 8.2. In this, our first question is 0.6 of a number is 20 less than the original number. Find the number. First, you understand the statement and just generate the equation according to that. Let original number is equal to x. According to the statement, it is given that if you multiply the original number with 0.6, so your result will be 20 less than the original number, that is x minus 20. We generate the equation according to that, so that give me 0.6x, and after transposing, 20 shift on one side, or you can shift all x value on one like terms arrange in the one side and try to find the x value. Then x minus 0.6x, 1 minus 0.6 give me 0.4, and 20 divided by 0.4 give me 15. That means my original number will be x is equal to 50. Next is question number 2. The positive number is 3 times another number. If 3 is added to the smaller number, the difference between the new number and the greater becomes 31. Then according to the statement, we have to find here two numbers. So we consider our two numbers will be x and y. And we consider y is greater than x. So according to that, like your first statement is positive number is 3 times another number, so we can consider our greater number is 3 times the smaller number. That is my first equation. And according to the second statement, if you subtract adding 3 in smaller number from the greater number, your result will be 31. So that is written in the statement. Difference of the new number and the greater number gives you 31. So now from first equation, if you arrange, like if you replace y is equal to 3x, your required equation will be 3x minus x minus 3 is equal to 31. So that means 2x is equal to 31 plus 3 is equal to 34. And after calculation, you get x is equal to 17, and your required number x is equal to 70, y is equal to 3x gives you 30. Gives you 3 into 17 is equal to 51. Now your third question is, we already done this type of question in playing with numbers chapter. The sum of the digit of two digit number is 14. So first I translate of this only this line here. So if I have a two digit number, so obviously there is a two positions, unit position and tens position. In unit position there is a x, and we consider in tens position there is y. Then according to unit position and tens position, our original number will be 10y plus x. And according to this first line is, if you add these two digits, that gives you 14. We mark this as our equation 1. But if you reverse the digit, like interchange the unit place digit and 10 place digit, your reverse number will be 10x plus y. According to the statement, reverse number is equal to, if you subtract 18 from the original number, that will be exactly your reverse number. So here now you arrange the like terms. You shift all the terms on the left side of the variable term. 10x minus x, y minus 10x give you 9x minus 9x is equal to minus 18. Now if you take 9 common, by cross multiply, minus 18 by 9 gives you minus 2. And your second equation is x minus y is equal to minus 2. If you extract x value from this second equation and substitute in equation 1 in place of x, that is y minus 2. So after calculation you will get y value is equal to 8, and arrange or replace y value is equal to 8 in your equation 1 or in your equation 2. In any of the equation, if you substitute the y value, you will get x value is equal to 6. Then you replace in original number y in place of y and x, whatever get value. You already have y is equal to 8 and x is equal to 6. When you replace the value, you will get your original number 86. And now your fourth question is,
The denominator of a rational number is 5 less than its numerator. That means if you consider numerator as x, then according to this first line, your original rational number will be x divided by x minus 5. But further it is written that in your statement, if you add 5 in the numerator, in this original rational number, only in numerator, if you add 5, your new ratio will be 11 by 6, or your new fraction will be 11 by 6. Now you cross multiply. 6 multiply with whole x plus 5 and 11 multiply with x minus 5. 6x plus 30, 11x minus 55. And after equating the like term, you will get x value 17. And when you replace back in the original number in place of x, that is 17 upon 17 minus 5, and your original number will be 17 by 12. Now your fifth question is, a car rental company charges rupees 500 a day and rupees 8 per kilometer for renting a car. Prakash rents a car for 2 days and his bill becomes to rupees 1644. How many kilometers did he drive? So here you have to find how many kilometers Prakash has to drive the car. मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, एक कार की रेंटल कंपनी है, उसके कुछ अपने रूल्स हैं. उन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर आप कार हायर करते हो एक दिन के लिए, डजेंट मैटर हाउ यू ड्राइव, सिर्फ रेंट का चार्जेस 500 अलग है, और नेक्स्ट जितने किलोमीटर आप ड्राइव करोगे उसको 1 किलोमीटर का ₹8 अलग चार्ज होगा हर 1 किलोमीटर का. अगर प्रकाश उस कार को रेंट पे लेके 2 डेज अपने पास रखता है और उसका बिल 1644 बन रहा है, तो उसने कितने किलोमीटर उस कार को ड्राइव किया, दैट यू हैव टू फाइंड. फर्स्ट वी विल राइट हियर रेंटल चार्जेस. सबसे पहले तो आपने लिखना है कि रेंटल चार्जेस कितने थे. रेंटल चार्जेस थे 500 रुपीज़ पर डे. पर डे मीन्स 1 डे के जो रेंटल चार्जेस थे वो 500 रुपीज़ थे. और टोटल हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि उसने कितने किलोमीटर, क्योंकि जो हमें निकालना है वो हम कंसिडर करेंगे. लेट द टोटल किलोमीटर, हाउ मच किलोमीटर ही हैज़ टू ड्रॉप, लेट द टोटल किलोमीटर इज इक्वल टू x किलोमीटर. सपोज उसने x किलोमीटर उसको ड्राइव किया 2 डेज़ में, तो उसका रेंट 500 के अकॉर्डिंग टू उसका रेंट सिर्फ एक डे का, अगर वो कहीं पर ड्राइव नहीं करता तो अगर 2 दिन अपने पास कार रखता है तो उसको कितना रेंट देना पड़ेगा. तो रेंट फॉर 2 डेज, रेंट फॉर 2 डेज, रेंट फॉर 2 डेज विल बी कंसिडर एज 500 इंटू 2 इज इक्वल टू 1000 रुपीज़. ओके, अब 1 किलोमीटर का रेंट कितना है, ये तो आपका अलग से विदाउट ड्राइविंग रेंट आ गया कार को रखने का 1000 रुपीज़. अब है कि कितना किलोमीटर उसने ड्राइव किया तो उसका रेंट उसका कितना बना. तो रेंट फॉर 1 किलोमीटर, अगर वो 1 किलोमीटर को ड्राइव कर रहा है तो 1 किलोमीटर का रेंट है 8 रुपीज़. तो अगर वो x, क्योंकि उसने x किलोमीटर ड्राइव किया 2 डेज़ में, वो हमें निकालना है. तो अगर वो x किलोमीटर ड्राइव करता है तो उसका रेंट कितना हो जाएगा 8x रुपीज़. और टोटल मनी कितनी होगी 100 प्लस 8x. तो उसकी टोटल मनी 100 प्लस 8x बनती है, पर उसने पे कितना किया 1644. तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, जब आप इनको ऐड करोगे, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, व्हेन यू ऐड दीज 2 टर्म्स, 1000 plus 8x must be equal to 1644. Now you have to solve it and find the value of x. 8x is equal to 1644 minus 1000. So after subtraction give you 644 and cross multiplying 644 by 8, that gives you 80.5 kilometer. दैट मीन्स टोटल उसने 2 डेज़ में प्रकाश ने कितने किलोमीटर ड्राइव किया 80.5 किलोमीटर, जिसकी वजह से उसका बिल बना 1644. 1644 में जो 1000 था वो तो सिर्फ उसके चार्जेस थे,
सिर्फ रेंटल चार्जेस थे कार के, और एक्स्ट्रा जितना किलोमीटर उसने ड्राइव किया एंड ₹8 पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग टू उसको जितना पेमेंट हुई टोटल, दैट इज 1644. नेक्स्ट है ₹400 is divided between Aman, Rakesh and Rita. If Aman got ₹40 more than Rakesh and Rakesh got ₹30 more than Rita, find the amount each of them have got. So how much share each and everyone get, like Rakesh, Rita and Aman. So 3 friends are there. So 400 should be divided among 3 friends. So here, so what we have given total money in our question. Total money that should be divided is 400 rupees. So first we consider, let Rita's share. Why we consider Rita's share first? Because Aman share is depend upon Rakesh and Rakesh share is depend upon Rita, and Rita's share is independent. Then which term is independent? We consider that as variable. So let Rita's share is equal to X rupees. According to that, Rakesh's share is depend upon Rita's share. Then Rakesh's share is equal to 30 rupees more than Rita. So that will be X plus 30 rupees. Next is Aman. Aman's share. Aman's share is 40 rupees more than Rakesh's share. That means Aman's share is depend upon Rakesh's share. If you add 40 in Rakesh's shares, that becomes Aman's shares. So that is X plus 70 rupees. Then according to the statement, when you add all these shares, that must be equal to 400. Then according to the statement, when you add these shares, X plus 30 plus X plus 70, so that must be equal to 400. Now you have to equate the like term and try to find the value of X. So here X plus X plus X give me 3X plus 100 is equal to 400. So 3X is equal to, by transposing 400 minus 100 give me 300. So divide by 3, 300 divide by 3 give me 100. Now X is 100. That means Rita's share, that is exactly X, that is 100 rupees. So Rita's share, how much money will get Rita? That is X is equal to 100 rupees. Rakesh's share is equal to X plus 30 is equal to 100 plus 30 is equal to 130 rupees. Next is Aman's share. Aman's share is equal to X plus 70 is equal to 100 plus 70 gives me 170 rupees. So that is Aman's share. Next is your 7th question is, Akhil covered a distance of 15 km in 16 minutes. He covered first part of the journey by walking at 4.5 km per hour and the rest of the journey by a car at 30 km per hour. Find the distance covered by the car. So we understand this statement by a diagram. So I will show you by diagram. Suppose this is the first starting point and this is the destination point. ओके, अब ये पूरा का पूरा डिस्टेंस अखिल ने यहाँ से यहाँ तक कवर करना है 15 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, और 60 मिनट मीन्स 1 आवर. तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस किस में कवर हुआ? 1 आवर में. एंड डिस्टेंस कितना था? 15 किलोमीटर. ओके, बट ये वाला जो डिस्टेंस है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. इक्वल पार्ट ही, सब वन इज स्मॉल वन इज बिगर वन. ओके, तो जब अखिल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो पहला इतना डिस्टेंस, सपोज उसने डिस्टेंस कवर किया किस स्पीड से? बाय वॉकिंग. यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस वो वॉकिंग से गया, दैट इज स्पीड थी उसकी 4.5 किलोमीटर पर आवर. और जितना यहाँ से यहाँ तक डेस्टिनेशन पॉइंट तक उसका डिस्टेंस रह गया वो उसने कार से कवर किया, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर.
आपको ये निकालना है कि ये जो कार से डिस्टेंस इतना सा कवर किया कार से, वो कितना डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक जो उसने कार से कवर किया। पहले तो अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक अगर 15 किलोमीटर है तो इस डिस्टेंस को अगर हम x कंसिडर कर लें तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दैट इज 15 माइनस x। तो फर्स्ट वी विल कंसिडर, अगर यहाँ पे मेरा डिस्टेंस x है, स्पीड गिवन है, तो फर्स्ट आई विल ट्राई टू फाइंड द टाइम ऑफ, कि पहला जो उसने वॉकिंग से डिस्टेंस कवर किया था उसको कितना टाइम लगा, तो उसको हम टाइम 1 कंसिडर करेंगे। फिर उसने बाय कार से जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, कितनी स्पीड और डिस्टेंस में कवर किया, तो पहले उसका टाइम निकालेंगे कि वो कितने टाइम में उसने कवर किया। तो जब टाइम 1 और टाइम 2 दोनों का आपका डिफरेंट वॉकिंग टाइम और कार का टाइम आ जाएगा, देन यू मस्ट बी इक्वल टू दैट टोटल, बिकॉज टोटल डिस्टेंस कवर करने में उसको 1 आवर लगे। दैट मीन्स टाइम 1 प्लस टाइम 2। तो ये जो आपका मेन टाइम है इसको इक्वलाइज करके वी ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर, सो टाइम वी विल ट्राई टू फाइंड द टाइम 1। सो better we just divide into 2 parts, so it will be easier for us, क्योंकि because this distance is divided into 2 parts। अब यहाँ पे जो first part है that is we can consider as case 1 and this second part को हमने नाम दिया case 2। अब case 1 में let distance covered by, or we can say that walking distance, let walking distance is equal to x kilometer, because we have total distances given to us that is 15 kilometer। अगर walking distance इतना है तो then we consider let distance covered by car, distance covered by car, we give this name distance as d2। So this distance is considered as d2 and this distance is considered as d1। So d2 is equal to 15 minus x kilometer, 15 minus x kilometer, and this distance 1 is equal to consider as x kilometer। अब इसकी speed that is a speed 1, that is a speed 2। केस 1 में जो वॉकिंग की स्पीड थी स्पीड 1, सो आई गिव दिस नेम एज स्पीड 1 इज 4.5 किलोमीटर पर आवर। और सेकेंड केस में जो स्पीड 2 थी, स्पीड 2 विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन 30 किलोमीटर पर आवर। जो कार में जाने की स्पीड थी वो 30 किलोमीटर पर आवर थी और जो वॉकिंग स्पीड थी 4.5 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट केस में यू हैव टू फाइंड द टाइम फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड केस में आपको टाइम 2 निकालना है। पहले वाले केस में आपको इतना टाइम फाइंड आउट करना है, सेकेंड वाले केस में भी आपको इतना पोर्शन का टाइम फाइंड आउट करना है कि कार का डिस्टेंस था कितने टाइम में कवर किया गया, दैट आई गिव द नेम इज d2। और इतने पोर्शन को टाइम कंसिडर किया गया टाइम 1। Now you have to apply the formula। टाइम निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, क्योंकि आपका स्पीड निकालने का फॉर्मूला था डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अगर आप यहाँ से डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर आपको डिस्टेंस और स्पीड गिवन है, टाइम निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, दैट इज डिस्टेंस 1 डिवाइड बाय स्पीड 1, डिस्टेंस 2 डिवाइड बाय स्पीड 2। और टाइम 1 आपका था x अपॉन 4.5 आवर and that is 15 minus x by 30 hours, that is the time 2। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट अगर हम इन दोनों टाइम्स को ज्वाइन कर दें तो एग्जैक्टली मेरे होल डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ, दैट इज 60 मिनट। 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर। देन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इफ यू ऐड बोथ द टाइम
that will be equal to the whole time. So that is 1 hour that is given in my question. So according to the statement, x upon 4.5 plus 15 minus x by 30 must be equal to 1. Now you have to find the LCM. Try to solve the terms. You find the LCM, try to solve the terms and try to find the x value in this case. So if you want to make more easier to that, I can open this decimal. Okay, so I can just go with 10, because when I remove this decimal, so that will be gives me 10x by 45 plus 15 minus x by 30 is equal to 1. So if I go with 5 table, so that give me 5 2s are 10, 5 9s are 45. So that give me 2x by 9. So if I go with the LCM of this one, so LCM of 9 and 30, I go with directly multiplication of this one. So that is 270. That means I have to convert this denominator as 270 and this denominator as 270. So I multiply this 2 by 30. Denominator also multiply by 30, because LCM is equal to 270. So to make it 270, I have to multiply numerator denominator with 30, and here I multiply with 9. 9 into 15 minus x and 9 into 30 is equal to 1. So that give me 60x plus 135 minus 9x upon 270 is equal to 1. So now I solve further with this calculation here. Now here 60x minus 9x. 60x minus 9x give me 51x plus 135, and I cross multiply 270 on another side. So when I solve this one, 51x is equal to 270 minus 135. 270 minus 135 give me, when you subtract this one, 270, 135, 5 and again 135. So that give me 51x is equal to 135. When you divide this one, 135 divide by 51, now you cross multiply. जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 135 डिवाइड बाय 51 गिव्स मी 2.65. 2.65 ओके 2.65 आवर. ये सिर्फ x का था कि x को कवर करने में कितना टाइम लगा. x मेरा फर्स्ट था पार्ट, फर्स्ट डिस्टेंस था. सो वी हैव टू फाइंड द x वैल्यू एज किलोमीटर. सो दिस इज किलोमीटर, सॉरी. So because we are not going to find the time, we have to find the distance. So x is considered as 2.65 kilometer. That is the first distance. Now you have to go with the second distance, that is distance 2, because that is distance covered by car. 15 minus x. 15 minus 2.65 kilometers give me 12.35 kilometer. So that is a distance covered by car. Distance covered by car is equal to 12.35 kilometer. So that is the distance covered by car. I repeat again. So what is in this question? अखिल ने एक डिस्टेंस कवर किया. यहाँ से फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट था, सेकेंड अराइवल पॉइंट. ओके, तो उसने कुछ डिस्टेंस बाय वॉकिंग कवर किया, कुछ डिस्टेंस उसने बाय कार कवर किया. आपको इसमें क्वेश्चन में ये निकालना था कि अगर स्टार्टिंग से लेके एंड तक टोटल डिस्टेंस 15 किलोमीटर था और उसको टोटल डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने में 1 आवर लगे, तो उसने बाय कार कितना डिस्टेंस कवर किया. तो यहाँ पे हमने 2 केसेस में डिवाइड किया. केस 1 था कि कितना टाइम लगा उसको वॉकिंग डिस्टेंस कवर करने में. केस 2 था कि कितना टाइम लगा उसको कार का डिस्टेंस कवर करने में, क्योंकि टोटल टाइम उसको 1 आवर लगा पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करने में 15 किलोमीटर. तो अकॉर्डिंग टू द रूल,
अगर टोटल डिस्टेंस 15 है तो फर्स्ट पार्ट x कंसिडर करेंगे, सेकंड जो बाय कार वाला पार्ट था 15 माइनस एक्स, स्पीड 1 4.5, स्पीड 2 30, टाइम 1 इज distance 1 divided by speed 1, time 2 is distance, second distance divided by speed 2. According to the statement, when you add all the time, that will be equal to the whole time. After calculation, you find the x value is 2.65, that is the first distance covered by walking. Then second is distance covered by car is distance 2, that is 12.35 kilometer, distance covered by car after subtraction 2.65 from 15. Next is your eighth question. Eighth question is Razia buys some shirts. Razia ने कुछ shirts खरीदी at ₹100 per shirt and some t-shirt at 180 per t-shirt. For every 4 shirts she buys 2 t-shirts. She sells all the shirts and the t-shirts at 5% and 10% profit respectively. Her total sale is ₹1500 504. You have to find how many shirts did she buy. So in this question, so Razia buys some shirt. Razia ने कुछ shirts खरीदी हैं, shirts और t-shirts खरीदी हैं. एक शर्ट की जो कॉस्ट प्राइस थी ₹100 थी और एक टी शर्ट की कॉस्ट प्राइस थी 180. अब जब उसने उसको बेचा तो शर्ट पे उसको 5% प्रॉफिट मिला और टी शर्ट पे उसको 10% प्रॉफिट. पहले तो आपने निकालना है कि उसने एक शर्ट और एक टी शर्ट कितने की बेची थी. शर्ट में अगर उसको 5% प्रॉफिट मिला तो 5% ऑफ 100, जब आप 5% ऑफ 100 को कैलकुलेट करोगे उसको कॉस्ट प्राइस में ऐड करोगे, सो दैट इज़ अ प्रॉफिट, क्योंकि 5% प्रॉफिट मिला था किस पे, कॉस्ट प्राइस पे. तो 5% ऑफ 100 विल बी एडेड इन 100 गिव्स यू 105. इट मीन्स एक शर्ट उसने 105 रुपीज़ की मार्केट में बेची. नेक्स्ट है अगर उसने एक टी शर्ट को कैलकुलेट करेंगे तो एक टी शर्ट पे उसको प्रॉफिट था 10% ऑफ 180 उसका कॉस्ट प्राइस था, तो 10% ऑफ 180, इफ़ यू कैलकुलेट 10% ऑफ 180 दैट गिव यू 18 रुपीज़. 18 को जब आप कॉस्ट प्राइस में ऐड करोगे दैट बिकम्स द सेलिंग प्राइस ऑफ वन टी शर्ट. इट मीन्स 198 की उसने एक टी शर्ट बेच दी. अब अगर मान लो वो मार्केट से वो बोले हर 4 शर्ट्स के साथ वो 2 शर्ट्स बाय कर रही है, इट मीन्स कि आप ये सोच के चलो कि जितनी उसने टी शर्ट्स खरीदी हैं उसकी डबल्स उसने शर्ट खरीदी है. ओके, अब शर्ट पे तो उसको 5% प्रॉफिट मिल रहा है, टी शर्ट पे उसको 10% प्रॉफिट मिल रहा है, पर टोटल जब उसने कैलकुलेट किया एंड ऑफ द डे उसको कितना उसको प्राइस मिला, रिटर्न हुआ, दैट इज़ 15,504. तो आपने ये निकालना है इसमें कि उसने कितनी शर्ट्स खरीदी थी. तो यहाँ पे हम शर्ट को x का नाम दे रहे हैं, टी शर्ट्स को y का नाम. तो अगर उसने 4x शर्ट्स खरीदी, 4 टाइम्स की, हमने यहाँ पे 4 टाइम्स इसलिए लिया है क्योंकि उसने 4 शर्ट को हमने x का नाम दिया था. अगर वो 4 टाइम्स जितनी शर्ट है, अगर वो 4 टाइम्स वो शर्ट खरीदती है तो जितनी टी शर्ट्स होंगी वो 2 टाइम्स हो जाएंगी क्वांटिटी, क्योंकि हर 4 शर्ट्स के साथ उसने 2 टी शर्ट्स बाय किया. सो दैट मीन्स 4x इज इक्वल टू 2y. दैट मीन्स उसने जितनी शर्ट खरीदी वी कंसिडर एज 4x. तो 4x मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स y, क्योंकि y हमने टी शर्ट का नाम दिया था. तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितनी टी शर्ट खरीदेगी 2 टाइम्स x, कि जितनी उसने शर्ट्स खरीदी उसकी क्वांटिटी अगर डबल कर दी जाए तो वो टी शर्ट्स की क्वांटिटी बन जाती है. पर बेसिकली हमने यहाँ पे शर्ट्स की क्वांटिटी निकालनी है. तो अगर सेलिंग प्राइस, एक शर्ट का सेलिंग प्राइस 105 है तो 4x शर्ट का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 4x इंटू 105 इज़ 420x रुपीज़. इसी तरह से अगर एक टी शर्ट का सेलिंग प्राइस 198 रुपीज़ है तो जितनी y टी शर्ट्स खरीदी, सेलिंग प्राइस ऑफ y टी शर्ट विल बी y इंटू 198. y की वैल्यू हमने यहाँ से जो इक्वेशन थी आपके स्टेटमेंट में था उसके अकॉर्डिंग टू y चेंजेस टू 2x, तो दैट मीन्स 396x रुपीज़. और टोटल उसको कितना
return मिला selling price, so that is 15,504. According to the statement, अगर आप शर्ट और टी शर्ट का सेलिंग प्राइस ऐड कर दो, that will be exactly 15,504. तो after equating the like term, when you find the x value will be 90, and shirt we consider at the very beginning, shirts will be is equal to 4x, that means 4 into 19 is equal to 76 shirts.